Let me ask you something very honestly. Have you ever felt that you are busy but not aligned? जैसे आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी समथिंग फील्स ऑफ. करियर सही चल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, बट फिर भी मन में एक क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली बॉदर करता रहता है. Am I really on my right path? Most people think this confusion means they are lost. But Indian philosophy says something very different. It says that you are not lost, you are just disconnected from your dharma. I am Mohit and I have been a writer and an aspiring author for 10 years now. I am a seeker and a student of Indian philosophy. And I want to help you navigate your life challenges with the compass of philosophy in a practical way. And today I want to talk about what your true life path really means. And I'll share a simple framework that anyone, regardless of their religion, age or profession, can apply in real life. So let's begin. लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि धर्म डजंट मीन रिलीजन. इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू राइचियसनेस एंड इट मीन्स द राइट पाथ और द राइट वे ऑफ लाइफ. जहां रिलीजन इंस्टीट्यूशनल है, वहीं धर्म एक प्रिंसिपल है. दोस्तों, न्याय फिलॉसफी में धर्म इज लिंक्ड टू राइट एक्शन बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग. इन मीमांसा, धर्म इज अबाउट ड्यूटी इन एक्शन and not intention alone. In Buddhism, dharma means dham, which means the way things actually are. So, when we talk about our life path, we should not ask what is it that you want. Instead, we should ask what sustains you and the world through you. लेकिन हम यूजुअली हमारे लाइफ पाथ्स को एक डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं. We often tell ourselves, once I find my purpose, I'll be peaceful. या फिर once I find my calling, life will make sense. बट इंडियन फिलॉसफी लाइफ को एक अलग तरीके से देखती है. इफ यू टॉक अबाउट सांख्य दर्शन और फिलॉसफी, देन लाइफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, जहां पुरुष हमारी अवेयरनेस है और प्रकृति हमारा नेचर. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट पुरुष एंड प्रकृति, देन यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियो वेयर वी डाइव डीपर इनटू सांख्य दर्शन. बट रिटर्निंग टू आवर करंट डिस्कशन, हमारे लाइफ के पाथ का कंफ्यूजन अराइज होता है जब हम किसी एक पाथ को फोर्स करने का ट्राई करते हैं instead of understanding our nature. भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्. And it means स्वधर्म or your own dharma or duty, even if flawed or imperfectly done, is superior to another's dharma or paradharma, even if done perfectly. In simple words, फेलियर एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और के धर्म या ड्यूटी को अपनी लाइफ का एम बनाना एक प्रॉब्लम है. And now that we have identified the problem, we can work on the solution. And the solution is an easy 4-step practical framework which we can easily implement in our lives. And before we move ahead, I would recommend you to stick through the end, because I have something that can prove to be useful for uncovering your life's path. Anyway, the step 1 of the framework is स्वभाव. सबसे पहले ask yourself, वो ऐसा कौन सा काम या स्किल है that energizes me and not simply excites me temporarily. Start by asking yourself, ड्यूरिंग एडवर्सिटी व्हाट रोल डू आई नेचुरली टेक. और वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजर, ऑब्जर्वर, प्रोटेक्टर या फिर एक्सप्लोरर. इन माई केस, राइटिंग एक स्किल है जो कि मुझे सिर्फ एक्साइट ही नहीं करती बट ऑल्सो फिल्स मी विथ एनर्जी इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ. एंड ड्यूरिंग एडवर्सिटी आई टेंड टू स्टेप इन टू द रोल ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड एन एक्सप्लोरर. एंड वेन यू लुक एट इट, दिस चैनल एंड माई बुक एक्टिंग राइट is a result of me being an observer and explorer wielding writing skills. And by the way, I'm quite happy and grateful to share that I have recently published my book Acting Right, Discovering Contentment Through 5 Pillars of Dharma, and it is now available for reading. In this book, I talk about how we find contentment in our lives by acting right. But that's enough about me. My point here is, हमारे लिए हमारे स्वभाव या नेचर को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और सांख्य दर्शन हमारे लिए इसे सिंपल बनाता है. It says that our nature is shaped by the 3 gunas or qualities, and that are sattva, which includes clarity, learning, harmony, etc. Rajas, which includes action, ambition, restlessness, etc. And tamas, which includes stability, resistance, and inertia. And our life's path must align with the dominant gun, not opposite. क्योंकि एक तामसिक पर्सन के लिए एक हाइपर एम्बिशियस हसल कल्चर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही एक राजसिक पर्सन के लिए एक मोनोटोनस लाइफ सफोकेटिंग हो जाती है, और एक सात्विक पर्सन एक अनएथिकल एनवायरनमेंट में अननेसेसरीली सफर करता है. इन कंक्लूजन, द मिसमैच बिकम्स द रीजन बिहाइंड आवर सफरिंग.
नाउ स्टेप 2 इज स्वधर्म। दोस्तों, स्वधर्म होता है हमारी ड्यूटी, ना कि हमारा जॉब टाइटल। अर्जुन वॉज अ वॉरियर, बट हिज स्वधर्म वॉज नॉट वायलेंस, इट वॉज प्रोटेक्शन ऑफ द वीक फ्रॉम द अनराइचियस एंड a responsibility to uphold justice in the society. एक टीचर का स्वधर्म नॉलेज ट्रांसमिशन है, एंड व्हाट दे अर्न फ्रॉम इट, इट्स सिंपली अ रिवॉर्ड, नॉट द अल्टीमेट गोल। एक बिजनेस पर्सन का स्वधर्म होता है वैल्यू क्रिएशन, नॉट ओनली प्रॉफिट। बट यूजुअली हम अपना स्वधर्म भूल जाते हैं क्योंकि हमारा सोल फोकस रिवॉर्ड्स पे रहता है। और परहैप्स यही एक रीजन है कि साइलेंटली एंड स्लोली आवर मॉडर्न वर्ल्ड इज कोलैप्सिंग, बिकॉज नो वन इज कंसर्न्ड अबाउट देयर रोल एंड ड्यूटी इन द वर्ल्ड। और वो इसलिए क्योंकि हमने अपने आप से क्वेश्चन करना बंद कर दिया है, जैसे कि हु अदर देन माई सेल्फ बेनिफिट्स इफ आई डू माई वर्क प्रॉपरली, एंड द ऑनेस्ट आंसर टू इट विल इवेंचुअली लीड अस टू आवर स्वधर्म। पार्ट 3 इज स्वकर्म। स्वकर्म इज अबाउट आवर ओन एक्शंस। नाउ टू पीपल कैन डू द सेम वर्क, लेकिन कर्म कार्य से डिफरेंट है। कर्म इज एक्शन while कार्य is work. Work is often driven by fear, greed or validation seeking, but action is motivated by responsibility, clarity and detachment. भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को उसका प्रोफेशन चेंज करने को नहीं बोलते हैं। He asks him to change his relationship with action. वो कहते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन. He says that you have the right to work, but never to the fruits of your action. In simple words, we should simply act out of our duty and not attach ourselves with the fruits of it. And that leads us to the fourth part of this framework, that is phal tyag. Now this is the hardest part, but let's try to understand it. Phal translates to fruit or the outcome or the result, while tyag translates to sacrifice. लेकिन यहाँ फल त्याग का मतलब अपने हार्ड अर्न रिजल्ट्स को सेक्रीफाइस करना नहीं है। We don't have to let go of the outcomes directly. Instead, we should let go of the attachment to the results. When you think about it, हम सफर इसलिए नहीं करते कि हमने जो सोचा वो हमें मिला नहीं, क्योंकि किसी भी आउटकम का हम पे डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं होता। हम सफर करते हैं क्योंकि हम एक आउटकम से अपने आप को अटैच कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट सभी इंडियन फिलोसॉफिकल आइडियाज हमें बताते हैं कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। फॉर इंस्टेंस, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि वो आपका ड्रीम था, एंड आपने उस बिजनेस को अपना टाइम, एफर्ट और मनी सब दिया, बट आफ्टर 2 years इट डिडंट वर्क आउट एंड फेल्ड. Naturally you will be disappointed and sad, but what is the actual reason behind that suffering? उस बिजनेस फेलियर ने डायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं किया. यू माइट हैव सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस, बट योर लाइफ डिडंट एंड देयर, एंड यू माइट हैव फेल्ट लाइक लाइफ्स एंड. बट व्हाई इज दैट सो? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को बिजनेस सक्सेस से अटैच कर लिया था द मोमेंट यू हैड द बिजनेस आइडिया, और वही अटैचमेंट हमारे दुख या डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बन गया. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉट एवर पाथ वी चूज फॉर आवरसेल्व्स, डिटैचमेंट ऑफ द आउटकम will eventually set us free, and our life's purpose must set us free, not bind us. तो दोस्तों, ये था एक 4 step framework जिसे यूज करके हम अपने लाइफ पाथ को इजीली फिगर आउट कर सकते हैं. बिकॉज द मॉडर्न एडवाइस विच जस्ट सेज फॉलो योर पैशन इज नॉट इनफ. इंस्टेड, इंडियन फिलोसफी रिकमेंड्स अस टू अंडरस्टैंड आवर धर्म और ड्यूटी फर्स्ट, बिकॉज फॉलोइंग पैशन विदाउट आइडेंटिफाइंग आवर पाथ फर्स्ट कैन लीड टू बर्नआउट, नार्सिसिज्म एंड इंस्टेबिलिटी. Buddhist philosophy tells us that craving itself is suffering. Therefore, a path guided only by desire will collapse under pressure. And if you are still not sure, then I would like you to ask these 4 questions, and it will help you figure out if your actions are aligned with your path or dharma. First, ask yourself, did my actions reduce confusion or increase it? Second, ask yourself, did I act out of fear or clarity? Third, ask yourself, did I feel lighter or heavier afterward? And fourth, ask yourself, did my work serve only me or extend beyond me? If most answers feel aligned, then you are on your path, even if life is hard. If not, then no success will ever feel enough. And if you want a detailed assessment, then you can download a free self-assessment framework to discover your path. The link is in the description box. And as I conclude this discussion, let me leave you with a thought. Your life path is not hidden somewhere outside. It is waiting to be revealed quietly through consistent right action and aligned with your nature without obsession over outcomes. क्योंकि धर्म कंफर्ट प्रॉमिस नहीं करता, it promises meaning, and meaning is stronger than happiness.
If this helped you to reflect even a little, then take the time to think over it. Thank you for being here. I truly appreciate it. Like this video if you found it insightful, as it will help me reach more people. Subscribe if you want to keep seeing more such videos. I will see you in the next video with another such topic to spark your curiosity. Till then, take care, be happy, and be kind. And remember, Krishnam Sada Sahayate.